Good morning, students. Good morning. Good morning. How are you? I hope you all are very well at your home. Students, in previous class, we have learned letter J in our written part. You know now? Okay. Now today we will learn letter U. Which letter we will learn today? U. Which letter we will learn today? U. U for umbrella. U for uniform. आप लोग स्कूल आते हो तो यूनिफॉर्म पहनते हो ना? पहनते हो ना? U for uniform. U for umbrella. Look here. Which letter is this? U. Which letter is this? U. U for umbrella. U for uniform. U for urn. U for utensils. U for utensils. U for umbrella. देखिए U for umbrella छाता है ना? U for umbrella. Okay, very good. Now U and sound of U is a. Sound of U is a. Umbrella. Umbrella. Urn. Urn. Okay beta, which letter is this? U and sound of U is a. Sound of U is a. Very good. Now we will learn how to write letter U. Firstly, take out your English notebook, pencil. Yeah, very good. सबने निकाल लिया है ना? Wow. Now look at the blackboard and start writing one. देखिए हम U कैसे लिखेंगे? आपने हिंदी में डाउन करके बनाया था ना? इंग्लिश में हम लोगों ने ऐसे डाउन कर्व सीखा था, अप कर्व सीखा था, लेफ्ट कर्व और राइट कर्व सीखे थे ना आप लोगों ने स्टार्टिंग में। तो ये जो डाउन कर्व होता है ना, बस इसी तरह से यू फॉर अम्ब्रेला बनता है। देखिए हमने पिंक लाइन से स्टार्ट किया इस तरह से डाउन कर्व, वापस पिंक लाइन तक लेकर आ गए हैं। ओके, कहाँ से स्टार्ट किया है? पिंक लाइन से स्टार्ट किया है हम लोग, फिर टर्न होते हुए सेकेंड ब्लू लाइन से वापस टर्न होके पिंक लाइन तक आ गए हैं। दिस इज यू। यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर यूनिफॉर्म, यू फॉर यूटेंसिल्स लाइक दिस। ध्यान से देखिए कैसे लिखा है मैम ने, बहुत इजी है ना? यस, देखिए हमने पिंक लाइन से शुरू किया है और पिंक लाइन पे ही फिनिश किया है, खत्म किया। देखिए ये U for umbrella. Okay, and sound of U is a. Sound of U is a. Okay beta, now we will say with phonic. Okay, so say loudly. Very good. A, B, B, C, K, D, D, E, A, F, F, G, G, H, H, I, E, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, V, W, W, X, Y, Z, Z। ओके बेटा, आज हमने कौन सा लेटर लर्न किया है? U। और ओरल में हमने सारे लेटर्स कर रहे हैं ना हम लोग डेली? यस, ओरल हमारा Z तक कंप्लीट हो गया है। आपको ओरल की भी प्रैक्टिस करनी है और रिटन की भी। ओके बेटा, बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर, बाय बेटा।